people are going, for example, right aerobic, if you are going to take the polar solvent, then it triggers to the different path and you will get the different compound. That might lead to the re-aromatization of this compound, and so that will follow the different path. And so here we have like rapid scaffold diversification from one path which we have studied, and we are able to get a lot of compounds, and with the mechanistic pathway we are able to branch the pathways, and we are able to develop different kind of compounds. And these platform strategies are allowing us to develop medicinal chemistry program, and we are accelerating the lead optimization in this way. And so we have developed a lot of compounds, developing the mechanistic pathways, and we are optimizing and screening the compounds for human for developing antimicrobial compounds. So then we could fight against the antimicrobial resistant species. And in this program, we are screening, we are taking human intestinal cells, and then we are incubating them, extracting RNA, and doing RT-qPCR and another biological assays to get the lead compounds. So in conclusion, we have developed the mechanistic pathway enabling rational synthetic design, and we are able to predict and expand the medicinal chemistry toolbox and mechanism-driven synthesis concept, and Navyug is quite new, and we are trying to integrate it with the biological mechanism of drugs, so that we can in future, if we could be able to design some synthetic pathways for particular disease. And this program is with the EU funded project, and that's called Maximum. Maximum itself means to maximize the immunity. And here you can see in the picture, this is the first Maximum General Assembly meeting that was involved in France. And in this research program, there are 5 institutes and a couple of industry partners are involved. And I'm working at Helmholtz Center of Infection Research, as you can see here. And this is the Helmholtz Center Braunschweig, and our department is located in the C-Bio building, which is this one. And now I would like to thank you, and again, if you have questions, I will be able to answer.
Sorry, Sunita ji had an emergency, so she had to leave, and I'm going to continue the session. I'm Dr. Pratima Ghosh, and continuing this flash talk, I would like and I would request Professor Abhinanda sir and Professor Ramkumar sir to please come up on the dais. I would like to request Ma'am Sangeeta Shukla ma'am to kindly felicitate Abhinanda sir with the memento and the planter. I would like to call upon Archana Sinha ma'am to kindly felicitate Ramkumar sir. I would like to call upon continuing with this flash talk session, we would be having a lecture by Dr. Abhinanda sir, and I would be introducing him first. Dr. Abhinanda Srivastava has been serving as an assistant professor in the Department of Chemistry, Baba Sahib Bhimrao Ambedkar University, Bihar, Muzaffarpur, India since 2017. In addition to his university responsibilities,
He has been entrusted with additional academic and research duties as the head of the Department of Chemistry at Nitishwar College, a constituent unit of Bihar University, Muzaffarpur. Prior to this current appointment, Dr. Srivastav served as an assistant professor of chemistry at a reputed engineering college in the Delhi NCR region, affiliated with Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow, India. He earned his master's and doctoral degrees in chemistry from Chaudhry Charan Singh University, Meerut. His research interests encompass coordination chemistry, medicinal chemistry, green chemistry, and organic chemistry. Dr. Srivastav is actively engaged in supervising PhD scholars in his areas of specialization. He has authored numerous research papers, edited and authored books for postgraduate students, and contributed book chapters with reputed national and international publishers. Dr. Srivastav remains deeply committed to academia and research, contributing consistently through peer review of scholarly articles, delivery of invited lectures, and presentation of research papers at national and international conferences, seminars, webinars, and workshops. What an illustrious biodata of Sir. So I would now ask Sir to kindly proceed with the flash talk and come up here. Thank you so much, madam. A very good afternoon, all of you. Myself, Dr. Abhinanda Srivastava, I am here to present the topic coordination compounds as an operative tool in medicine. As we are all aware that the medicinal chemistry has been reduced by the organic molecules, but as the demand of the medicinal moieties are going to increase due to several lifestyle diseases and resistance towards the ongoing molecules. So, in the search of the novel moieties which have the potential to behave like the medicine, is obvious the need of the medical field. So, organic
molecules when going to be embedded with metal complex, metal salts, then a new class of the compound, coordination compounds are produced which have the potential to behave like the medicinal molecule. So here, this is just to a phrase that the copper and non-organic figure star, which was a latent prop given by the father of chemotherapy, Paul Ehrlich, according to which a molecule only can behave like the drug when it binds. So the binding must be with the biological components inside the cells of the living being. So the drug chemotherapy was coined by Paul Ehrlich, and which is basically have the focus on the molecules they can bind on the molecule, those molecules which can bind only they can act as the drug. So he was awarded Nobel Prize, and the chemistry related to the pharmaceutical agents is termed as the pharmaceutical chemistry. The word medicine, pharmaceutical, and drugs are often used interchangeably. So, human beings have been using drugs to treat illness and diseases for more than 3,000 years. So, this is again the man behind Oswald Spengler, and generally recognized as the founder of the modern pharmacology. So, in 1872, he became professor of the pharmacology at the University of Strasbourg in Austria, where he studied the pharmacology of chloroform and chlorohydrate, and in 1878 published the classical text outline of the pharmacology. Since the starting of his work and focusing on the chemicals as the pharmaceuticals, the era of the modern pharmacy has been started. So this is a graph or chart presentation towards the different era, where the first era and the golden age has been represented in the yellow color, and the next dark age and the new era. In the new era of the medicinal development from the 1960 to 2019, we have a group span of the related to the antimicrobial peptides development, and there are so many developments have been achieved during these development decades. So, why the need of the coordination compound as the drug molecule? Though many medicinal molecules are available in hands of the medical practitioners, but resistance towards the clinical drugs and elevation in the lifestyle disease creates continuous research demand in the discovery of more effective and safer drugs. Here, to enrich the medicinal gaps, metal complexes have been proven a best tool to cure many microbial infections and metabolic anomalies in human body. Some researchers in the field of the bioactive coordination compound designing produce clinically approved metal complexes based drugs for treatment and cure of many lethal diseases like cancer, rheumatoid, fungal infections, bacterial infections, neurodegenerative diseases, etc. So here, why the new type of the medicines are required? Because if we are just going to focus on antimicrobial resistance, then according to a report, up to the year after 2050, we are going to be highly burdened by the antimicrobial resistance. There are 28 million people projected to fall into poverty because of the antimicrobial resistance.
7.5% decline in the global livestock production. There 3.8% decline in the global exports, up to $1 trillion global increase in healthcare costs. So this is just one factor, the antimicrobial resistance, which is going to influence our economy by such a great influence up to the year of the 2045. Then other factors which are related to failure of the ongoing drugs or the decline in the efficiency of the ongoing drugs definitely going to suppress our economical growth and other factors for the requirement of the developed nation. So this is the time to search new type of the medicines, new zone of the medicinal values. So here most of the bacterial organisms affect the number of the epidemic outlines and notable warning to the human being, bacterial infections and fungal infections. There are so many, there is a list of the bacteria and fungus which are very dangerous to the human being and causing numerous deaths, number of deaths annually at the global level. Here is a list of the bacteria and developing different types of the diseases. Like the same way, fungal strains are also very dangerous for the human being, and they are just going to be resistant due to the different kinds of the factors, misuse of the antibiotics, so or the change in their DNA also. So here, one of the very horrible data, percentage increase in various types of the cancer cases up to the year of the 2045 worldwide. The figure A is shown in the human male and the B for the human female. Here, if we are going to see the 73.1% colon cancer may be increased up to the year of the 2045 as per the report, and the female says that increase of the 82.1% pancreas cancer. This is the probable data of increasement of such type of the cancerous disease. So where till the date we don't have the such type of the medication which can cure and control the cancer properly, and meanwhile the drugs are going to be resistant day by day. So this is the time to innovate and design new kind of the drugs, molecules to protect and fight against these pandemics in the cancers and other diseases. So this is a very horrible data. Other type of the cancers may also be increased. Stomach cancer plus 72%. So here, estimated rate of the mortality caused by the different cancers in the 2022. Up to the year of the 2022, the rate of death due to the cancer is very high due to the breast cancer, that is the 49%. जब जितना death हुआ है उसमें 49% death जो breast cancer की वजह से हुआ है. 25.6% सर्वाइकल कैंसर की वजह से, 19.6% कोलोन कैंसर की वजह से और 5.8% ड्यू टू द किडनी cancers. So it is also a warning for especially for the females. They must be aware and conscious about their health related to the cancer symptoms. Here now. That's why I am saying the metal-based platform to be applied as a drug molecule. Not only the coordination complexes, but other molecules in the form of the photoactivated framework, small metal complexes, inorganic, organic hybrid materials, metal-modified macromolecules, metal oxide nanoparticles. There are so many options provided by the metal-related medicines. So here I am especially going to be discussed with the metal complexes, coordination chemistry and well. In which fields can be applied? The antibacterial, anti-cancer, antifungal, antioxidant, anti-inflammatory, antibiotic, antidepressant, and each and every type of the Alzheimer-like neurodegenerative diseases can also be tested for the effectiveness of the metal complexes. So, metal complexes have the versatility due to their biological importance, biological compatibility with human cells. अब ये बात है क्यों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्यों हो सकते हैं.
इतने सारे मॉलिक्यूल्स के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स किस तरीके से इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं मोस्टली जितने आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं दे आर वेरी इजी टू फिट विद द बैलेंस सिस्टम व्हाई we people are very curious why क्यों coordination chemistry can be accepted as a medicinal tool because nature is also asking our nature is also asking where are you coordination chemistry where are you coordination chemistry where are you coordination chemistry then the coordination chemistry exists in the nature here the nature is replying I am in your chloroplast here because if a large molecule like the chlorophyll may exist inside a living cell of plant, then it is the proof that metal complex moiety can be adjusted inside the living cell. Another one. This is the structure of the chlorophyll. Here, the human being is also plant पूछ रहा है तो human being क्यों नहीं पूछेगा? मेरे अंदर कहाँ हो तुम? Where are you? Where are you? Where are you? Coordination chemistry? Yes, I am your blood. Yes, I am your blood. Throughout your life, I am running. A big molecule of the hemoglobin is continuously running inside our cells to carry oxygen from each cell of the body. Then this is the proof of existence and adaptability of the metal complexes like large molecules inside our body. When natural existence is proved, then its compatibility as a medicinal tool can also be recognized. So this is the vitamin B12 cobalt complex. Here, why? How can metal complex can be accumulated or act as a medicine inside the body cell? Because metal attacks can bind DNA, can bind with the DNA binding and docking properties, DNA cleavage, cytotoxicity, higher binding affinity, higher binding energy, higher anti-cancer activity. These are the few factors which make metal complexes reliable and compatible to be fit as a drug molecule inside the living cell. So, why? हम लोग बाजार में जाते हैं पैरासीटामोल, एस्प्रिन, कोई भी एमोक्सिसिलिन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो ड्रग्स आप देखते हैं मेटल्स देखते हैं आप, सॉरी मेडिसिन देखते हैं आप, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नजर आती है। लेकिन कभी हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया इस चीज पर कि वी आर ऑलरेडी सराउंडेड विद वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेडिसिन, commercial medicines which are available on the medical shops and used in abundance by our doctors to treat many lethal diseases. Cisplatin is one of the major anti-cancer medicine which is used to treat the different kinds of the cancer. This is available in market. Paraplatin is another compound of the platin which is used in market and used for the treatment of the cancer. This is the carboplatin. Oxalic platin, this is another platinum compound which can be used, which are being used for the treatment of the cancer. This is the radio brand name, is a complex of the gold and it is used for the rheumatoid arthritis. अगर किसी घर में कोई लोग आर्थराइटिस से पीड़ित होंगे तो शायद उनके घर में ये डिब्बी मिल जाएगी। So these are the metal complex, the metal based medicine. This is the bacteriacin gene brand name. This is the compound antibiotic bacteriacin. The gene complex already available in market. Cimerex is the metallic component which is used widely. Zero form. This is the complex of bismuth. And so many more compounds are available in our market based on the metal moieties and they are very effective as the organic medicines. So here, not going so much fast, the modern synthesis type of anti-cancer coordination compounds
can be discussed here in very brief. As we are talking about the sustainable development, so being the coordination chemist, it is my responsibility, it is our responsibility to find out, to search such paths to develop and design coordination moieties which have the drug-like potential by the sustainable means the green chemistry. All the green chemistry principles can be easily applied on the synthesis procedure of traditional method of coordination complex synthesis. We have the macrowave synthesis method, ultrasonic synthesis method, aqueous solvent synthesis methods, mechanical synthesis method, and some other green methods which can be applied very beautifully and effectively, and the resultant in the form of the yield and the reduction in the time has been reported by various scientists, various researchers to design these bioactive compounds. I am just going to represent here. These are the some organic, metal-based component, platinum and non-platinum component, which are already in market or under clinical trial or have passed different phases of the clinical trial to be treated, to be used for the anti-cancer medicine. Here, as I have discussed, that the material chemists are also trying to minimize the side effects on the environment by the synthesis procedure. That's why coordination chemists also adopting the green chemistry aspect for the synthesis of the materials. Especially, I am coming here to discuss the anti-cancer molecule. So, this is the some notable compounds which are very beautifully synthesized by the different kinds of the green aspect methods and beautifully designed to produce good yield and time efficient molecules having the anti-cancer property. Like this molecule, this ligand beautifully synthesized by the microwave synthesis, and this ligand has been synthesized by the ultrasonic synthesis, mechanical synthesis, and synthesis in the aqueous solvent. And further, these ligands were applied to develop different kinds of the metal complexes which have the potential to inhibit the cancer cells. These are some notable compounds that are reported earlier with the high capacity to inhibit the cancer cells. Different kinds of the cancer cells have been checked to treat or to inhibit the cancer cell growth or by different types of the bacteria. This, as people are saying that the platinum complexes are the major components which are used as the anti-cancer drugs. So, coordination can try to put some new molecules which are the non-platinum molecules developed with the uranium or the zinc or the copper, and many more have the good efficiency to inhibit the cancer cells. These are also some examples. Mostly they are the nitrogen occupied and oxygen occupied ligands which can produce good quality of the anti-cancer molecules. Here some other examples are also produced, the cobalt molecules, cobalt complexes, and here cobalt, nickel, and the zinc and cadmium molecules which have the efficient anti-cancer property developed by the green route of the synthesis. Okay. Here are some of examples. There are some recent examples. So here the stack paragraph representing the percentage cell viability of the complexes against various cancer cells. Those complexes which we have discussed here, and some of were tested for the percentage cell viability, and they give a very good result for the MCF7, HEGA, STT, and the HEK293 cell lines. So here we can say that the metal complexes may be a promising tool to treat the cancer in upcoming future. Targeting cancer cell lines by metal complexes has great credence, as many of them are being used to treat lethal cancer disease. Drug molecule targets the cancer cell line in many ways which are well known with DNA interaction, oxidative stress reduction, immune response activation. The DNA interaction of metal complexes coordinated with the nitrogen ligands and some other heteronucleosides occurs by the various modes of the bonding, hydrogen bonding, electrostatic, and hydrophobic group. The significance of nitrogen coordinating sites is prestigious, as in the interaction with the DNA and the metal ions combined with nitrogen sites of the
nucleobases. So the metal complexes can induce reactive oxidation disease and can induce apoptosis by knowing the nature of the cell. Process can be further process resulting in the cancer cell death. The metal complex which on the nitrogen ligand provides the correct pathway to get rid of cancer with a highly efficient mechanism. The non-platinum metal complexes provide some advantages in mechanistic properties of the anti-cancer drug delivery system, such as the higher action therapeutic potency of target toxicity reduced, which will not affect healthy cells in the human body. Okay. The significant property of the cell complexes can be attributed to the smooth oxidative damage of the tissue by metal by a free radical trajectory, which is analogous to the Fenton reaction. Binding ability to DNA is observed to modified when metal centers are altered with different metal. On the basis of the research done by the oncologist and chemist on anti-cancer activity of the potential compound, the probable mechanism of anti-cancer activity of complexes may be approached in the figure on the next slide. So the general representation of the mechanism when drug molecule containing the metal ions enters the cancer cells, binding to the DNA or protein, and it damages it, and DNA damage oxidative stress, apoptosis pathway and the cancer cell. This is the general mechanism which is very easy to understand by our UG and PG students for their illustrations, but the detailed mechanism is not so much easy. But different aspects of the metal complex can affect or can achieve the different pathways to so the cell growth to inhibit the cell growth. So here I acknowledge the members of this fantastic conference and also the authorities of my university for providing research facilities. So I think I have the to be finished. So I just want to show the some achievements from the my laboratory. This is my undergraduate students are working there, and they are trying to develop some green route of the drug for preparation of the drug molecules like the aspirin and paracetamol, etc. And the easy label contribution from our research group in the complex division. Sometimes the complexes have been derived and they are under the investigation for the anti-cancer activities. There is some data in the bioactivity with the talking studies. I am not going to discuss all these things because the time is so much limited and not just to interpret the topic, as it is a flash talk only. So, these are the molecules developed from my laboratory, and they have some specific structure. These molecules are under specific investigation for the structure and balancing potential. These are some of the notable publications from my laboratory. In the publication house, from time to time. Here are some bioactive compounds. Here are some ongoing projects in my laboratory with my PhD and PhD students. These are some publications. This publication was done by my PhD students last year, and one of the recent publications in 2026. My PhD students with similar is got publication in the Navyug Communication, research advancement in the green synthesis of the anti-cancer metal complexes and with the nitrogen oxide organism molecules. This is my research team, my PhD students and the UG students and PG students. Thank you. Thank you so much. Thank you very much, sir. That was a very illustrious presentation, and the students of chemistry present over here must be learning how to present the topic which they have chosen, as well as how to go about in the research. And sir has given them an enriched presentation, a great learning, sir. Thank you very much. Any questions from the students or the teachers or anybody? Sir, cancer disease is
very useful and problematic for the world as well as India. Now the scientists are able to invent a proper medicine to take care of the disease. So Russia recently developed one medicine that is based on the mRNA, and it is proposed with the therapy as well as providing a consistent medicine to the patient. So why that India is unable to fulfill the requirement of just create a new medicine for the patient? What is the reason? I want to just like एक जिज्ञासा है, इसके प्रकार जिज्ञासा यही है, अगर आप साइड में बताएं तो जब बच्चों को हमारे साइंस पढ़ना होता है तो उस टाइम वो किसी कोचिंग सेंटर में जाके एसएससी की तैयारी कर रहे होते हैं एट द लेवल ऑफ द ग्रेजुएशन, ठीक है, एंड आफ्टर पीजी they get involved just to get crack the gate examination. They are not learning the science. What is the concept behind the science? They are just trying to put their self in a job. That's why we are here at this stage. But I am proudly saying that during the COVID season, it was the India who developed a very fantastic vaccine to serve the globe from the saving community of the globe. तो इंडिया में पोटेंशियल की कमी नहीं है और कुछ हमारे पास इनोवेशंस आइडियाज बहुत सारे हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से नहीं हो पाता है। अगर आप लोग और हम लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे, डेफिनेटली वी कैन मेक अ न्यू इंडिया। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. Our next speaker is Professor Ramkumar Tiwari, and Professor Ramkumar Tiwari, kindly. You are going to come. Sir, kindly come up on this. Professor Ramkumar Tiwari, Head of the Department, Physics, DSNB PG College, Lucknow. He is a physicist, author and social technocrat committed to sustainable development. He is the convener of Mangalam Abhiyan, an initiative renowned for its work in environmental conservation through e-resurgent projects saving water bodies from toxic chemicals. He combines his expertise in physics and IT with social service to drive community-based sustainable practices. Over to Ramkumar, sir. किसी को हिंदी में समझने में दिक्कत तो नहीं होगी? बहुत ही अच्छा होगा। अगर हिंदी में समझने में दिक्कत ना हो तो हिंदी में बोले, न तो बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। काफी समय से हम लोग बैठे हैं, सब सुन रहे हैं, तो कई बार कॉन्फ्रेंसेस में थोड़ा सा बोझिलता आ जाती है। अभी एक मैम मिली थी, बता रही थी कि हम तो भाई हिस्ट्री वाले हैं, तो मैं कोई नहीं, मैं भी फिजिक्स पढ़ता और केमिस्ट्री से बचपन से करता रहा, केमिस्ट्री इसलिए छोड़ दी। लेकिन जब रिसर्च का समय आया तो कहते हैं ना कि एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक ही है, अलग अलग तरीके से लोग सोचते हैं। तो जिस केमिस्ट्री से डर के भागा वही केमिस्ट्री के पीछे पड़ गई और वही पॉलीमर स्ट्रक्चर, केमिकल प्रॉपर्टीज सब समझना पड़ा। और वैसे भी लाइफ की केमिस्ट्री समझना बहुत जरूरी होता है, बिना केमिस्ट्री काम चलता भी नहीं है। तो सबसे पहले तो आप सब बैठ के सुन रहे हैं और सबका उत्साह बढ़ा रहे हैं बोलने वाले का, भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए। ये जोरदार ताली कि आपने हम सबों का उत्साह बढ़ाया है और हम लोग हिम्मत कर पा रहे हैं कि बोल पाए आपके सामने। और इसके पहले कि हम इस विषय पे आए, मैं चाहूंगा कि केमिस्ट्री का भी है और वो भी इंटरनेशनल लेवल का है, तो एक छोटा सा खेल केमिस्ट्री में खेलेंगे और उसके बाद फिर मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। केमिस्ट्री के 3 शब्द हम लोग बहुत कॉमनली जानते हैं, फिजिक्स में भी है, इसलिए फिजिक्स वालों की तरफ से मैं बोल रहा हूँ।
जो फंडामेंटल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सब जानते हैं, सबको पता है। तो ऐसा करते हैं कि एक खेल खेलते हैं। हाथ में आपके मोबाइल है, मैं देख रहा हूँ सब लोग मोबाइल में एंगेज हैं। थोड़ी देर मोबाइल को छोड़ देंगे तो अच्छा लगेगा। हाथ खाली कर लीजिए। 3 शब्द में बोलूंगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। खेल खेलना है बैठे बैठे। अच्छा लगे तो अपने घर में भी जाके खेलिएगा बाल बच्चों के साथ, अपने घर में। करना क्या है, मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन तो ऐसे करना है, प्रोटॉन कहेंगे तो ऐसे करना है, और न्यूट्रॉन को ऊपर करना है। कोई दिक्कत तो किसी को नहीं आएगी इसमें, तो बस यही खेल। याद रखिएगा, जो गलत खेलेगा वो क्या हो जाएगा, आउट नहीं होना है। जो गलत खेलेगा वो सीधे सीधे कहना ठीक नहीं लगता लेकिन मरेगा। क्यों मरेगा ये भी बता देता हूं। हमारे भारतीय संस्कारों में जो हमारे भारतीय खेल हैं उसमें हम आउट नहीं होते हैं। आप कोई भारत का खेल बताइए। कबड्डी, कबड्डी है ना, कबड्डी में आउट होते हैं कि मर जाते हैं, मर जाते हैं। और फिर दूसरी तरफ वाला कोई मर जाता है तो जिंदा भी हो जाता है। ये भारत का ज्ञान है। हमारे यहाँ जीना और मरना भी खेल खेल में होता है ना। हम ये नहीं कि इस बार आए हैं तो आखिरी बात है, अरे फिर आएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे। ये हम मौका हमारे भारत ने हमको सिखाया है। और भारत का मतलब ही होता है, भाव मतलब ज्ञान, व्रत का मतलब लगा हुआ। जो लगातार ज्ञान में लगा हुआ है, ज्ञान की खोज में लगा हुआ है, वही भारत है। आज भी आप ज्ञान की खोज में लगे हुए हैं। तो हम लोग इसको खेलते हैं। पहले मैडम थोड़ा हमको टाइम बता दीजिएगा, कितने मिनट मुझे खत्म कर देना है, तो उसी हिसाब से स्नान कर लूं। ठीक है, तो फिर जल्दी जल्दी हुआ करें। चलिए, सब लोग रेडी होंगे। क्या करना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हाथ खाली होगा तभी खेल पाएंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करना है, प्रोटॉन का सब और न्यूट्रॉन के हाथ ऊपर जाए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। देखिए आप, हम लोग अपने घर में खेल सकते हैं इसको, अपने माता पिता के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ। अब आइए हम लोग चलते हैं इस विषय पे। जिस विषय को आपने चुना है बहुत ही जरूरी विषय है। दुनिया में हम आए हैं तो सब कुछ खा पी के खत्म करके यहीं चले जाएं तो आने वाली पीढ़ियां क्या लेंगे। खाओ पियो मौज करो, आने वाले लोगों को देखेंगे। ऐसा नहीं करना है। तो आपने विषय जब चुना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, सस्टेनेबल फ्यूचर का। ऐसा फ्यूचर होना चाहिए जो सतत विकास में रहे, सतत रहे। हमारे बाद भी दुनिया रहेगी कि नहीं रहेगी, रहे तो वो दुनिया बनी रहे तभी रहेगी ना जब हम कुछ छोड़ के जाएंगे उसके लिए। तो अपने जो आवश्यकता की चीजें लेना, बाकी छोड़ जाना, यही सस्टेनेबिलिटी है। अब इसमें केमिस्ट्री का रोल है, वो क्या हो सकता है और कैसे केमिस्ट्री इसको दूसरे डिसिप्लिन को जोड़ेगी, ये आज का विषय है जो आपने अपने टॉपिक में लिया है। और मैं भी इसी के इर्द गिर्द रहने की कोशिश करूंगा। हमने भी इसमें कहा है कि द साइंटिफिक क्वेस्ट फॉर इको फ्रेंडली कल्चरल मेटेरियल्स। देखिए, हम अपने अतीत से अपने को काट नहीं सकते, अच्छा हो बुरा। और भारत में तो सब कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है ही नहीं। हम लोगों में बहुत अनुभवी मैडम हमारे सामने बैठी हुई हैं, सुधा मैडम। हमसे, हम तो केमिस्ट्री पता है बिल्कुल नहीं समझते हैं, मैडम को तो समझ में सब आता है। नहीं मैडम, तो अब हमको गाइड कीजिएगा कि हमें करना क्या है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि हम जब बोलेंगे तो उसके बाद आप भी सब परीक्षण करवाएंगे और आप भी सब मार्गदर्शन लेंगे। तो मैडम, इसमें हमारे जो कल्चर में वो चीजें सतत हम अपने साथ लेके चल रहे हैं। मैं फिजिक्स का बंदा हूं, लेकिन हुआ क्या कि एक्सीडेंटली जो केमिस्ट्री आती नहीं थी, फिजिक्स में आ गए, कुछ मिला जुला करना था। तो कुछ विषय बचपन में सोचते थे कि कुछ रिसर्च करेंगे, तो सही बना मैडम ये समझ में आता था रिसर्च क्या करेंगे।
जिस पे दिमाग गया था वही लोग खोज चुके हैं, वही कर चुके हैं। कभी सोचा पंखा बनाएंगे, पंखा बन गया, बल्ब बनाएंगे, बल्ब बन गया, टेलीविजन बनाएंगे, अरे कुछ जो सोचो वही बन गया। तो हम सोचते थे हम करेंगे क्या, हमारे कुछ बचा नहीं है। और जब रिसर्च किया तो उसमें टॉपिक मिला हमको, कैसे होगा मैडम, ये कुछ आ जाएगा प्लीज आ जाइए। तो जो टॉपिक मिला वो था हमारा नॉन लीनियर ऑप्टिक्स का। अब देखिए ऑप्टिक्स तो आपको सुने हैं, अब नॉन लीनियर ऑप्टिक्स पता नहीं क्या चीज होती है, हमको ही समझ में नहीं आया, रिसर्च पूरा हो गया। तो हमको लगा कि अब ऐसे विषय पे आना पड़ेगा जो हमको भी समझ में आए और दुनिया को भी समझ में आए, ताकि हम बता भी सके कि हमने किया है। तो मैडम इत्तेफाक से हम अपने आसपास के वातावरण जब देखे, अपने घरों में देखे, तो हमको कुछ परंपराएं दिखी जो बेहतरीन परंपराएं थी। हमको अपने माइंड को, सोल को कंसंट्रेट करने के लिए हमने ईश्वर की परिकल्पना की है। और हम अपने आसपास के वातावरण में देखते हैं कि हम लोग पूजा पाठ करते हैं और तमाम प्रकार की मूर्तियां होती हैं, तो उनको लोग डिस्पोज ऑफ करते हैं। आप चित्र देख रहे होंगे, इसमें साफ साफ दिख रहा है। ये जो राइट साइड वाला चित्र है, किसको अच्छा लग रहा होगा? किसी को अच्छा नहीं लग रहा होगा, हमें भी अच्छा नहीं लगा। तो हमने सोचा कि ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो यही वो दर्द हो रहा है, यहां से यहीं से रिसर्च हो सकता है। मैंने वही रिसर्च को शुरुआत कर दिया कि चलो ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि जो समस्या है इसका कोई समाधान हो जाए। मैडम आगे, तो समाधान क्या होगा, इसमें हम लोगों ने एक विषय लिया। एक हर किसी के अंदर पॉजिटिविटी है, अच्छाई है, लोग चाहते हैं कि सब अच्छा हो, परंतु अच्छा कैसे हो? कहते हैं कि ईश्वर भी वहीं आता है जब स्वच्छता होती है। आप खूब पूजा पाठ कीजिए, गंदगी फैला दीजिए, भगवान को आना भी होगा तो कहेंगे यहाँ तो गंदगी है, कहाँ चलो, उधर चले चलो। लखनऊ में देखिए भंडारों की शहर है, खूब भंडारे लगते हैं। अब भंडारे के पहले हनुमान जी की पूजा भी कर लेते हैं। अब कहते हैं कि 20 साल से भंडारा लगा रहे थे, कृपा अटकी हुई है मेरे पे। आपके कॉलेज में भी होता है। अब कृपा क्यों अटकी हुई है भाई? अरे हनुमान जी आपके तरफ आ रहे थे, अब देखे कि बाहर गंदगी का अंबार आपने लगा दिया था, तो कहे चलो उस तरफ जहां साफ सफाई हो, चले गए वहां पे, कृपा आप तक आते तो रुक गई। तो स्वच्छता पवित्रता हमारे जीवन का पार्ट है, हमने परंपरा से सीखा है। और बड़े मंगल में इसको हम लोग खूब देखते हैं कैसी स्थिति होती है। तो मुझे वहां ध्यान आया कि हमको केमिस्ट्री के लोग हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि अभी सर बता रहे थे, इसके पहले हमने ट्रिपल आर सुना था, 5 आर सुना था, वो 11 आर की चर्चा करके गए। और अभी ग्रीन केमिस्ट्री की चर्चा हो रही थी, तो हमको लगा केमिस्ट्री के लोग इसमें हेल्प करेंगे। और ये देखिए कैसे ये भी समझ में आया। हुआ क्या कि मैं लगातार लोगों से करते रहता हूं, भाई ऐसा कुछ किया जाए कि ऐसी मूर्तियां बने कि अपने घर के गमले में उसको गला दिया जाए। तो लोगों ने कहा अरे कोई दिक्कत नहीं, पानी में डालिए, बाल्टी रखिए, उसमें गल जाएगा। लेकिन जब हमने देखा कि हम तो अपने बाल्टी में मूर्ति को डाल के 2 महीना 4 महीना छोड़ दिए, वो गली नहीं, तो वह क्यों नहीं गलने पे? क्यों नहीं गलती है वो? क्योंकि वो पीओपी की होती है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसी चीज जो गलने वाली नहीं है, बहुत सालों के बाद गल भी जाती है तो चिपचिपा हो जाती है, जिस पानी में जाता है वहां पर वहां के ऑक्सीजन को नष्ट कर देता है, कैसे काम चलेगा? अब क्या इसके लिए कहा जाए कि आप अपने परंपराओं को छोड़ दें? नहीं, साइंस के पास ये विकल्प है। साइंस हमको ये साहस देता है कि अगर समस्या है तो समाधान है, और हम उस समाधान के पार्ट बने, यही जो है हमारा कर्तव्य है। हम अपने टेम्परामेंट को, अपने जो है ज्ञान को, अपनी परंपराओं को जोड़े आपस में और एक समाधान प्रस्तुत करें, यही विज्ञान है और उसी तरफ को चलना है। थोड़ा आगे देखिए, अपने यहाँ हम लोग बहुत बात करते हैं ITS की, जो हमारा प्राचीन ज्ञान विज्ञान है, उसकी हम बात करते हैं। तो उसमें सब कुछ दिया हुआ है, बिना कुछ भी खोजना नहीं है, इसीलिए इसको सर्च नहीं, रिसर्च कहते हैं। हमको जो कर हो चुका है उसी को रिसर्च करना है, दोबारा सर्च करना है। अगर कुछ बना देते तब तो वो इन्वेंशन हो जाएगा, वो नई चीज हो जाएगी। जैसे टेलीविजन नहीं था, टेलीविजन आ गया, वो इन्वेंशन हो गया, इंटरनेट इन्वेंट हुआ। बट हम तो रिसर्च करने वाले थे, हमें दोबारा सर्च करना है। अब क्या क्या है देखिए, हमारे यहाँ
हमारे ज्ञान विज्ञान में परंपराओं में मिट्टी के बारे में चर्चा हुई है, सॉइल के बारे में, ऐसे बाइंडर्स के बारे में चर्चा हुई है जो कि मजबूती देते हैं, केमिस्ट्री का जो मिट्टी है उसको देते हैं। ऐसे कलर के बारे में जो प्राकृतिक कलर है उनकी चर्चा हुई है, ये सब है हम लोगों के पास। लेकिन क्या है कि इन्हें हमको मिलाना पड़ेगा। ये आप देख रहे हो सब जाना पहचाना है, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। देखिए 4th सेंचुरी में हमने जो अभी एक पिलर बनाया है उसका आज तक जंग नहीं लगा, सब लोग सुने होंगे इसको। इसका मतलब कि आज के 1600 साल पहले हमारे पास एक ज्ञान विज्ञान था। देखिए 12वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी में जो है ये हमको उस समय ये केमिस्ट्री का सब जानकारी थी, तो हमको जानकारी है ये सब। अब हमें करना क्या है, उस ज्ञान विज्ञान को हमें जोड़ना है कहां से, जो अभी केमिस्ट्री का काम इधर शुरू होता है कि केमिस्ट्री को वो जो एलिमेंट्स हैं उनको कैरेक्टराइज करना है, उनकी प्रॉपर केमिकल फाइंडिंग्स है, जो प्रॉपर्टीज है उसकी स्टडी करनी है, उनको ऑप्टिमाइज करना है, मतलब कि वो अपने मैक्सिमम रिजल्ट को दे सके, और फिर उनका असेसमेंट होगा कि वो कितना ठीक कर रहे हैं, और तब उसका हम लोग स्केलिंग करके मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये दिमाग में कहां से आती है बात। मैं एक 12वीं क्लास के बच्चे से बात कर रहा था कि वो मूर्तिकार है, हमने कहा कि तुम ऐसी मूर्ति क्यों नहीं बनाते हो जो पानी में अपने आप गल जाए। तो पूछा सर आप करते क्या है, मैंने बताया मैं टीचर हूँ फिजिक्स का। तो कहा प्रॉब्लम तो आपने खड़ी की है, समस्या हमसे पूछ रहे हैं। हमने पूछा क्यों भाई, हम कैसे प्रॉब्लम के पार्ट बन गए। कहा कि आप रिसर्च करने वाले लोग हो, अगर आप पीओपी नहीं बना के हमको देते तो हम पीओपी में क्यों बनाते। तो समस्या आपने खड़ी की तो समाधान भी आप कीजिए। और सर दैट वाज द टर्निंग पॉइंट व्हेन आई डिसाइडेड टू डू समथिंग इन दिस फील्ड। और इसी तरह से हर किसी को कहीं ना कहीं जुड़ना पड़ता है। इसमें ये जो देख रहे हैं आप बायोफ्यूल्स, हमारे यहाँ जैसे गुड़ है, कुछ ऐसे फल होते हैं, उनका जो अर्क होता है उसका इस्तेमाल होता है। ये अपने आईपीएस मतलब प्राचीन ज्ञान विज्ञान में सब पता है, पढ़ाते समय होता है। इसी तरीके से देखिए कलर है, ये सब नेचुरल कलर है। हम अभी होली आ रही है, सब लोग होली खेलेंगे और सब वही आर्टिफिशियल कलर हम लोग यूज करेंगे, फिर बाद में जो है स्किन के डॉक्टर के पास दौड़ेंगे और तमाम और भी समस्याएं आएंगी। तो ये है समाधान हमारे पास है, बट हम उस तक पहुंच नहीं रहे। और फर्क क्या है देखिए दोनों कि अगर आप पीओपी एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है और कोई आप बायोकम्पोजिट्स जो हमारे प्राचीन शास्त्रों को लिखित अगर उसको लेते हैं, तो जहां बायोडिग्रेडेबिलिटी की बात आती है, ऐसी चीज जो कि अपने आप गल जाए, नष्ट हो जाए, वो हमारे प्राचीन जानकारी में है। पीओपी वैसा नहीं है। ऐसे देखिए टॉक्सिसिटी, जो जहां पे मिलेगा जाकर उसको जो है टॉक्सिक जहरीला बना देगा, वो पीओपी में पड़ता है। स्ट्रेंथ उसकी अलग होती है। कल्चरल वैल्यू उसका कुछ भी नहीं है, पीओपी कोई प्रणाम नहीं करने वाला है। कच्ची मिट्टी को लोग प्रणाम कर लेते हैं, इवन गाय के गोबर से बनी हुई कोई चीज है उसको भी प्रणाम कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है गाय का जो गोबर होता है उसको गोमय बोलते हैं। आगे बढ़े मैडम। वो ये जरा आप देखिए बीच का जो जूम इन किया हुआ जो फील्ड है आपको दिख रहा होगा, ऐसे आपको दिखेगा नहीं, लेकिन जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा। ये जो अनडाइजेस्टेड प्लांट है इसमें क्ले मिलाते हैं और जो माइक्रोबियल बाइंडर्स होते हैं उनकी हेल्प से ये नेचुरल फाइबर का काम करता है। ये रिइंफोर्समेंट होता है और ये एक जैसे फिल्टर होता है ना, फिल्टर का काम करता है। इवन अगर ये गल जाता है पानी में जाकर जब, तो मछलियों के लिए खाना बन जाता है। तो सोचिए कि एक तरफ हमने उसको बनाया, यूज किया, विसर्जित किया और फिर वो किसी का भोजन बन गया। तो ये कुल मिलाकर कैसा साइकिल बन जाता है जिससे कि हमें हेल्प मिलती है। ऐसे देखिए आपने इसका भी सुना होगा सीड गणेशा के बारे में। जो आप मूर्ति इस्तेमाल कर रहे हैं उसी में जो एक सीड है, सीड को आपने डाला और फिर ये जो जर्मिनेट हुआ, तो ये फिर जर्मिनेट हो जाता है। इसको बोलते हैं विसर्जन से सृजन। पहले आपने विसर्जित किया, अब फिर वही सृजित हो गया। तो सृजन से विसर्जन, जो मैंने पहले कहा था कि जीना और मरना, हम आए हैं तो जाएंगे, तो एक तरीके से हम विसर्जित हुए और फिर सृजित हो गए, ये इसमें बताया गया है। नेक्स्ट अब देखिए करना क्या है इसमें
हम लोग को लैब्स, मैं सभी को इसमें आमंत्रित करता हूँ। हम लोगों ने थोड़ा काम प्रारंभ किया है और हमारे डॉक्टर संजय शुक्ला जी हैं, उनके नेतृत्व में काम प्रारंभ किया है। इसमें मैं आप में से जितने लोग हैं, चाहे वो हिस्टोरियंस हैं, हिस्ट्री से जुड़े हैं, सोशियोलॉजी से जुड़े हैं, लिटरेचर से हैं, अपने आइडियाज को थोड़ा स्टडी करके, अपनी प्राचीन परंपराओं को स्टडी करके इसमें जुड़िए। आप सबके लिए उसमें काम है, फिजिसिस्ट के लिए भी काम है, केमिस्ट्री के लिए भी काम है, बायोलॉजी वालों के लिए भी काम है। और मुझे लगता है कि हम सब लोग मिलेंगे तो ये जो सॉल्यूशन है इसका वो होगा। हम ऐसे कंपाउंड को बना सकते हैं जो डिग्रेडेबल हो, जो टिकाऊ हो और जो हमारे नजरों में पवित्र भी हो। इस प्रकार से ये जो हमारे भावी रिसर्चर्स बैठे हुए हैं, आपके लिए भी इसमें स्टडी का पॉइंट है। आप लिटरेचर को संभालिए, देखिए, और जो लोग काम कर रहे हैं इस फील्ड में, अगर आप उनके साथ जुड़ते हैं तो मुझे लगता है कि जो एक विचार आया, क्योंकि मैं फिर वही रिसर्च अपना नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स का बताता तो शायद वो ना मैं समझता ना आप समझते। तो मैं आपके सामने ओपन क्वेश्चन बस ये लेके आया हूं कि आपको ये देखना है कि अपने विषय को, अपनी एक्सपर्टीज को कैसे आप इस चीज से इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे मुझे कभी लगता था कि मैं रिसर्च क्या कर सकता हूं, लेकिन आज मुझे नहीं लगता है कि मैं क्या कर सकता हूं। मैंने तय कर लिया है। शायद अगर आपको भी ये लगे कि आप इस फील्ड में कुछ कर सकते हैं, चाहे आपका विषय कुछ भी हो, तो आप सबका स्वागत है। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, कुछ गलत बताया होगा तो यही छोड़ दीजिएगा, वो मेरा है। इसीलिए तो आपको मैं आग्रह करने आया हूं, ये बताइए पीओपी का रिप्लेसमेंट क्या होगा। कुछ ना कुछ तो मैडम करना ही पड़ेगा। लेकिन एक्चुअली क्या है ना कि हम लोगों को ऐसे जो एलिमेंट्स हैं, जो कंपाउंड है, उसको आज विज्ञान की दृष्टि पे, कसौटी पे कसना पड़ेगा। हमको उसका साइंटिफिक जो पैरामीटर्स है उससे स्टडी करके और फिर तय करना पड़ेगा कि कितने हमारे लिए यूजफुल। थैंक यू। बहुत ही सार्थक और बहुत ही आवश्यक लेक्चर था सर का। और मिट्टी से जो ये मूर्तियाँ बनाई जाती है, गमले की मिट्टी से बन जाती हैं और वही विसर्जित भी हो जाती है बहुत ही आसान तरीके से। तो इसको भी आप लोग एक्सपेरिमेंट के तौर पे कर सकते हैं। और अब मैं फ्लैश टॉक जो है वो उसके कंक्लूजन के लिए एंड थैंक यू नोट के लिए सरोज रानी मैम को यहाँ पर बुलाना चाहूँगी। Both of you, and giving us such an insightful and informative lecture. Your session on coordination, compound and beam chemistry. Both lectures are highly enriching and full of valuable knowledge. You explain your complex concept in such a clear, simple and engaging manner, and that they became easy to understand and interesting for all of us. We are truly grateful for your guidance, inspiration and for sharing your experience with us, and thank you so much, sir, both of you, on behalf of Navyug Kanya Mahavidyalaya. As we are running short of time, I would like to start the next session for technical session. And before that, मैं ये कहना चाहूँगी कि दूसरे जो सेशंस हैं वो दूसरे रूम्स में शुरू हो गए हैं, पोस्टर प्रेजेंटेशंस भी हो रहे हैं। तो काइंडली आप लोग अपने अपने स्थानों पे चले जाए जो बच्चे यहाँ पर हैं। और जितने स्टूडेंट्स का या जितने रिसर्चर्स का इस ऑडिटोरियम में प्रेजेंटेशन है वो कर रहे हैं। जॉली यादव, are you here? Okay. Sakshi Singh, Vinay Singh, Sakshi Singh, are you here? Okay. Vinay Singh,
प्रेरणा महावर, प्रेरणा महावर, काइंडली आप लोग आगे आ जाएं। अनुष्का and our favorite Malvin मैम is here। हम लोग इसीलिए हम यहाँ हैं क्योंकि मैम है यहाँ पर। In this technical session, I would like to invite Professor Amrit Mitra sir to kindly come up on the stage and chair the session. Professor Amrit Mitra sir. Professor Amrit Mitra sir. I would next invite Dr. Vivek Srivastava sir to kindly come up on the dais and co-chair the session. Without wasting much of time, I would like to invite our participants. But before that, I would introduce Professor Amrit Mitra sir. Dr. Amrit Krishna Mitra is an assistant professor of chemistry under the West Bengal Education Service and is presently posted at Government General Degree College, Singapore. He served as the founder head of the Department of Chemistry at the same institution. He also held the position of controller of examinations at Rani Rashmoni Green University for nearly 2 years. Dr. Mitra completed his BSc in chemistry and his research primarily, I am just jumping on the research activities of sir because it's an illustrious CV. His research primarily focuses on synthesis and photophysical studies of heterocyclical compounds. He has authored 51 publications in reputed Scopus and WOS indexed international scientific journals and publishing houses. In addition to a book, and several manuscripts are currently in press. Dr. Mitra serves as a reviewer and editorial board member for multiple internationally recognized journals, including those of the Royal Society of Chemistry, Elsevier, Springer, and Bentham Science, among others. He is also an active active member of the Board of Studies and syllabus committee member for postgraduate chemistry programs and has successfully supervised over 30 postgraduate students in completing their MSc dissertations. Dr. Mitra is deeply committed to chemistry education and is an elected member of Executive Council of the Association of Chemistry Teachers, headquartered at Homi Bhabha Center of Science Education, TIFR Mumbai, a position he has held since January 2020. His association with Indian National Chemistry Olympiad began in 2019. In 2024, he was appointed as National Coordinator Science Olympiads, Government of India as a scientific observer and jury member for the Indian delegation at the International Chemistry Olympiad held in Riyadh, Saudi Arabia. In 2025, he was appointed to serve in the same capacity for the Indian delegation at the ICHO held in Dubai. He is also recognized as a resource person for the Vigyan Pratibha Teachers Training Workshop at NISER Bhubaneswar and IISER Kolkata, an initiative under the Department of Atomic Energy. It's a very long and illustrious CV, and though I don't want to shorten it up and I want everybody to listen it, but still, very sorry sir, I'm just cutting it short.
Um, Mr. Mitra is heading, and he is regularly entrusted with the confidential academic responsibilities by the Ministry of Education, Government of India, which he has consistently carried out with distinction. We are really very much privileged to have you here, sir, and I would like you to come up on the dais and say some words here. Thank you very much for your kind introduction. And I would like to thank all the organizers present over here, and especially Dr. Neha Agarwal Madam for inviting me in this international conference. And I wish all the best to this particular conference. Thank you. Now I shall invite our presenters, and then after the first presentation, I will introduce our co-chair. Okay? Shall we call upon Jolly Yadav here? And it's a 5 minutes. Maximum of 5 minutes. We are running short of time. If the president is presenting the thing in a little less time, that's okay. Good afternoon, all of you, presented men and our teachers, professors. मुझे यहाँ पे टॉपिक प्रेजेंट करने के लिए बोला गया, जैसे कि है तो ये केमिस्ट्री से, बट उसमें जो टॉपिक था सस्टेनेबिलिटी का, तो मुझे लगा कि अगर कहीं ना कहीं जैसे सर ने बताया कि अगर इसको हम सस्टेन करते हैं, चीज़ों को प्रयोग करते हैं, तो हमारे जो आगे आने वाले जनरेशंस हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। तो मैंने इसमें एक्चुअली मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ और इसलिए मैंने इसको कहीं ना कहीं शिक्षा से जोड़ने की कोशिश करी है। तो नेविगेटिंग ह्यूमन डायमेंशन सोशल साइंसेस एंड बिहेवियरल स्टडीज एट कैटलिस्ट फॉर सस्टेनेबिलिटी, जो मैंने ये पेपर लिखा हुआ है उसमें हमारा जो मेन अचीव करने का मतलब है वो सस्टेनेबिलिटी, मीटिंग प्रेजेंट नीड्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन is fundamentally a human challenge, not merely a technological or ecological one. While the biophysical limits of our planet are well documented by the natural sciences, the drives of the unsustainable practices are deeply embedded in social structures, cultures, norms, economic systems, and individuals' psychological constituents. This research also that the social and behavioral sciences are not an essentially but central to the sustainability projects that a comprehensive review and synthesis of the literature from sociology, psychology, anthropology, economics, and political sciences. This paper explored three core themes of this. Understanding the roots of unsustainability, examine how social norms, values, inequalities, and institutional frameworks produce an unsustainable system. Analysis and influencing behavioral changes.
elaborating the theories and intervention aimed at shifting individual and collective action towards pro-environment outcomes, remaining institution and governance for sustainability, investigating pathway for transforming economic model, policies, frameworks, and governance structure. The paper, equitable and cultural resonant sustainability strategies moving beyond a focus on fixing and the environment for transforming the social world that shapes our relationship with it. जो यहाँ पे हम लोग ये समझना चाह रहे थे कि कैसे इसको सस्टेन करें, तो हम लोगों का ये मतलब नहीं कि किसी यहाँ पे ये जंग नहीं चल रही है कि ह्यूमन वर्सेस टू इन्वायरमेंट, बट हमें कहीं ना कहीं जो ह्यूमन बींग्स या इनका बिहेवियर है, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, उसको कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के इक्वल करने की बात करने की कोशिश करी है। तो पहला हमारा जो है तो वो एम्परेटिव ऑफ द ह्यूमन डायमेंशंस को समझना होगा, अंडरस्टैंडिंग द रूट्स ऑफ अनसस्टेनेबिलिटी। हमें ये जानना होगा कि हमारी जो रूट्स हैं वो कैसे सस्टेन की जाएं, सोशल स्ट्रक्चर्स, कल्चर एंड इनइक्वालिटी को नॉर्मल कर करके, द सोशलॉजी की लेंस, नॉर्म्स, वैल्यूज और सिस्टम को समझ करके, सोशल प्रैक्टिसेस के थ्रू, वैल्यूज और वर्ड वाइड्स के थ्रू, द इकोनॉमिक नेस, मार्केट, एक्सटर्नल एंड बियॉन्ड। हम लोग क्या करते हैं कि चीजों को किसी भी तरह एक्सप्लोर करने के लिए तरह तरह के ऐसे केमिकल्स बनाते हैं जो बहुत ही ज्यादा ह्यूमन लाइफ को इफेक्टेड करते हैं। द इक्विटी एंड जस्टिस लेंस, इनइक्वालिटी एंड विजिबिलिटी, एनवायरमेंटल जस्टिस, क्लाइमेट विजिबिलिटी, ग्लोबल इनइक्वालिटी, एनालाइजिंग एंड फ्लेक्सिबल बिहेवियर चेंज फ्रॉम न्यूज टू डीप एंगेजमेंट। जब तक हम सभी एंगेज नहीं होंगे इन सब सारी एक्टिविटीज में, तब तक हम कभी भी कुछ भी अच्छा फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। बियॉन्ड रिलेशनल चॉइस, इनसाइट फ्रॉम प्लीज। ओके, थैंक यू मैम। In the meantime, now we are going to felicitate Dr. Amrit Gupta sir. I would like to call upon Dr. Neha Agarwal. Now I would like to call upon Sushma, Ma'am Sushma ma'am, to felicitate Dr. Navyug Srivastava sir with the memento. Now we will have a brief introduction of Dr. Navyug Srivastava sir. Dr. Navyug Srivastava is an associate professor of biochemistry in the Department of Chemistry and Biochemistry, Sharda School of Engineering and Science, Sharda University, Greater Noida. His researches focus on telomere biology, epigenetics, DNA damage response pathways, protein biochemistry, cancer biology, and post-transitional modifications of proteins with a strong emphasis on molecular mechanism underlying cancer progression. Dr. Srivastava obtained his PhD in biotechnology from the National Institute of Immunology, New Delhi, and Autonomous Institute of the Department of Biotechnology, Government of India. His doctoral research elucidated the functional implications of BLM helicase phosphorylation of by checkpoint kinase 2, resulting in 6 high-impact publications in reputed international journals. He subsequently pursued postdoctoral research at the CSIR Institute of Genomics and Integrative Biology, New Delhi, under a DBT Wellcome Trust funded project. Dr. Srivastava has been awarded a DST SCRB Teachers Associateship for Research Excellence, a project, and is currently principal investigator on the ongoing ICMR funded research project. He has published more than 30 papers extensively in peer-reviewed
international journals, and holds one granted patent. Dr. Srivastava is the recipient of several national and international awards and is a life member of prestigious scientific bodies including the Indian Association of Nuclear Chemists and Allied Scientists, Indian Society of Chemists, Biologists, Royal Society of Biology, UK, Indian Science Congress Association, Indian Association for Cancer Research, and the Society for Biotechnologists. We welcome you, sir. Sir, kindly come up on the dais, please, and say a few words. Very good afternoon to all present here. I am very thankful to Neha who recently invited me for the participate in the conference. I am Dr. Vivek Srivastava, Associate Professor, Department of Prevention Biochemistry, Sarda University, Noida. My area of research is cancer biology and the protein biochemistry. Those who are interested in the cancer biology area, yes, we can collaborate with me and we can work together. This is the basically motto of the conference. So thank you so much. Now we shall continue with the paper presentations. May I call upon Sakshi Singh? Vinay Singh, are you here? Vijay Singh, Vinay Singh? अच्छा, प्रेरणा महावर, please आप अपना pen drive लेके ready रहिए. Anybody here who is not with a pen drive and is directly going to be present here? ऐसा कोई है? आप pen drive से? आप ऐसे आपको बुला लो? Good afternoon, everyone. So my topic is nanocatalysis and approach towards green chemistry. So before diving into the topic, I want to give some introduction about green chemistry. Green chemistry is simply the set of principles as given by Anastas, which given by Anastas, and in green chemistry of 12 principles, out of 12 principles, he has given one point about the catalysis. So we use generally homogeneous catalysis or heterogeneous catalysis, but we can use catalysis in a green way, or we can use the nanocatalysis. When we see the classification of catalysis, we see that there are three types of catalysis: homogeneous, heterogeneous, and biocatalysis. So, homogeneous and heterogeneous have different characteristics, but after merging those characteristics, we can synthesize nanocatalysis that has the combined effect of homogeneous as well as heterogeneous. So nanocatalysis has the following characteristics, as it has large surface area which mimics homogeneous, and insolubility in catalyst in reaction mixture which mimics heterogeneous catalysis. Now the different types of catalysis are broadly of 4 types: metal nanoparticles and metal oxide, cold shell, and single atoms. Now, a brief introduction of the synthesis of nanocatalysis from top-down approach and bottom-up approach. Now, I am going to especially deal with the green synthesis,
that is from plant as well as microorganism. So on the next slide is the microbes and plant extract. We can synthesize green synthesis of nanocatalysts. The following are the bacteria, fungi and algae in microbes, and plant extracts are from stem and leaves, which are used to synthesize many nanoparticles such as silver and gold. Now, some green applications of nanocatalysis. They can be used as photocatalytic and for treatment of wastewater and industrial effluents. Now, there are certain challenges that deals with the synthesis of nanocatalysis, as they are very nanostructured, so their synthesis cannot be done. It cannot be controlled, and it is thermally unstable, and there is a high possibility of poisoning due to large surface area. So we need to overcome these challenges. Now, finally, I conclude that it is more efficient over traditional catalytic systems such as homogeneous and heterogeneous. So we need to work upon these challenges and improve our synthetic applications so that we can deal with nanocatalysis and use them in the future. Thank you. Now, this is the time we were waiting for. I would like to call upon our Major Dr. Malvi Parsodhi ma'am to come up with her presentation. थैंक यू डॉक्टर प्रतिमा। मंच पर उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार और इस ऑडिटोरियम में जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उपस्थित हैं सभी को नमस्कार। और जैसा कि जस्ट इसके पहले भी बात हुई कि जो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस से हैं सब्जेक्ट्स के अलग अलग वो भी किस तरह से साइंस को समझ सकते हैं या क्योंकि मल्टीडिसिप्लिनरी था तो इससे कैसे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं और क्या सॉल्यूशंस दे सकते हैं। तो मैंने इसको सिख आइडियोलॉजी से जोड़ते हुए एक अपना छोटा सा पेपर तैयार किया है। मुझे उम्मीद है कि हम कुछ ना कुछ इसमें नया लेकर के जाएंगे। माय टॉपिक फॉर प्रेजेंटेशन इज सरबत द भला एंड सस्टेनेबल साइंस, a Sikh ethical framework for chemical innovation. The relationship between science and ethics has become one of the most important discussions of the today. While chemical sciences have transformed modern life through medicines, agriculture, industry and technology, they have also contributed to pollution, climate change, resource depletion and ecological imbalance. These challenges show that scientific progress cannot remain value neutral. The future demands a model of science that is guided by ethical responsibility and sustainability. In this context, the Sikh principle of Sarbat da Bhala, meaning the welfare of all, offers a powerful moral framework for rethinking the goals of chemical innovation and sustainable scientific development. Sikh philosophy presents a holistic understanding of the universe in which human beings and nature are deeply interconnected. The foundational concept of Ek Onkar emphasizes the unity of all creation. This worldview challenges the modern tendency to treat nature merely as a source for exploitation. Instead, it encourages respect, balance and responsibility toward the environment. When applied to scientific activity, this principle suggests that research and technological advancement must consider their broader ecological and social impact. Another key idea in Sikh thought is Hukum, the cosmic order that governs the universe. This concept highlights the importance of harmony and balance in natural systems. Environmental degradation, excessive industrialization and unsustainable chemical practices can be understood as violations of this balance.
From this perspective, sustainability is not only a technical challenge but also a moral duty to live and work in harmony with the natural world. The concept of Sarvata Bhala expands this ethical responsibility further. It calls for the welfare of all beings, including present and future generations. This idea closely aligns with the modern concept of sustainable development, which seeks to meet present needs without compromising the ability of future generations to meet their own. When scientific research is guided by the principle of universal welfare, its goals shift from profit-driven innovation to socially responsible and environmentally conscious development. Chemical sciences provide a strong example of why such an ethical framework is necessary. Industrial chemical production has enabled large-scale agriculture, advanced pharmaceuticals, and modern materials. But it has also produced toxic waste, polluted water systems, and contributed to climate change. The rise of plastic pollution and hazardous chemical residues demonstrates the urgent need for a new scientific paradigm. Green chemistry has emerged as a response to this crisis by promoting waste reduction, renewable resources, safer chemicals, and energy efficiency. Interestingly, these goals resonate deeply with Sikh ethical teachings that emphasize harmony, compassion, and responsible living. The Sikh idea of seva or selfless service offers an inspiring way to reimagine scientific practice. When science becomes a form of service, innovation is directed towards solving human and environmental problems rather than maximizing profit alone. This approach encourages the development of clean energy technologies, eco-friendly materials, safe medicines, and sustainable agricultural practices. In this sense, scientific research becomes a tool for collective well-being rather than individual gain. An important aspect of sustainability is intergenerational responsibility. For future generations have a right to inherit a healthy planet with clean air, safe water, and stable ecosystems. Sikh teachings encourage long-term thinking and responsible actions that benefits not only the present but also the future. This perspective strengthens the ethical foundation of sustainable science by linking scientific responsibility with moral accountability. Integrating Sikh ethical principles with chemical sciences create a powerful interdisciplinary model for sustainable development. Such a model emphasizes ecological humility, collective welfare, responsible consumption, and harmony with nature. It encourages scientists, policymakers, and educators to work together in building a future where innovation serves humanity and the environment simultaneously. At the end, I would like to say the environmental challenges of the modern world cannot be solved by technology alone. They require a combination of scientific knowledge and ethical wisdom. The principle of Sarvatra Bhala provides a meaningful moral framework that aligns closely with the goals of sustainable and green chemistry. By integrating spiritual values with scientific innovation, humanity can move toward a future where progress is measured not only by technological advancement but also by the well-being of all living beings and the health of the planet. Thank you so much. Thank you very much, ma'am. We have known the importance of Sarvat Bhala. Be very short, Rena. Good afternoon. I am delighted to present my work on sustainable applicability of smart and innovative titanium dioxide nanoparticles for water purification. From this presentation, I will discuss how re-synthesized titanium nanoparticles combined with the biopolymer coating offer an eco-friendly and efficient solution for water treatment. As the water pollution is the most global problem,
due to the rapid industrialization and urbanization has several impacts on the global water quality, which affect our environment, increases toxicity in ecosystem, bioaccumulation of pollutants in the world, in the food chain, and long-term environmental impact. These are the some limitations of a traditional water treatment methods. These are high energy consumption, low efficiency for prospective pollutant, also generate secondary pollution and high operational costs. So we need some advanced technology, that is the nanotechnology in the water purification, as it has high surface area and reactivity, due to which it enhances catalytic efficiency and remove water pollutants and metals. Zinc oxide, iron oxide and titanium dioxide nanoparticles are the example of these nanoparticles. Among these, titanium dioxide nanoparticle has gained particular attention because of their stability and non-toxicity and perform excellent performance in environmental remediation. Why we use titanium dioxide nanoparticles? Due to its excellent photokinetic activity, high chemical and thermal stability, non-toxic, biocompatible nature, low cost and easy availability, and also efficient in disinfection of microbes, degradation of organic pollutants and removal of dyes and pharmaceuticals. As we use green methods, so I use green tea leaf as it is rich in polyphenols, catechins, which act as a natural reducing and stabilizing agent, enable green eco-friendly synthesis of titanium dioxide nanoparticle, produces smaller, stable titanium dioxide nanoparticle with high surface area, which enhance photocatalytic and antibacterial activity, efficient wastewater purification. After that, I also coated the titanium dioxide nanoparticle with the biopolymers, which improve their dispersion, stability, and photocatalytic performance, leading to enhanced pollutant removal efficiency and reusability in a water purification system. Here we use ketosene as a biopolymer, which is natural, biodegradable, and due to the presence of amino and the hydroxyl group, which absorb the dyes, heavy metals, and the other organic pollutant on the titanium dioxide surface, which is easy to purify our water and make the system environmentally friendly and suitable for wastewater treatment. Please conclude. As titanium dioxide nanoparticles are effective for the water purification, and for the green synthesis we use the plant extract, that is the green leaf tea. After, for the more improvement in stability, we use the polymer coating, which enhances reusability and reduce secondary pollution and offers a promising solution for the sustainable wastewater treatment. Thank you, sir. आपने जो ग्रीन टी लीफ किया है तो टाइटेनियम ऑक्साइड बनाया है आपका टारगेट यही है ना कि यू आर यूजिंग द ग्रीन टी लीफ एंड टू सिंथेसाइज टाइटेनियम तो आपने ये सर्वे डिटेल सर्वे में देखा है कि ग्रीन टी लीफ से जो टाइटेनियम ऑक्साइड पहले रिपोर्टेड नहीं है सर है ऑलरेडी यूज किया है बट वी यूज डिफरेंट मेथड्स That is, I am asking what is the novelty of your work? What is the difference between those reported papers which have already developed titanium oxide nanoparticles with the green tea leaf, and what are you going to change in this one? Firstly, I used polymer coating in that because there is no use the polymer coating, which enhance my work.
Let's go through those exercises. Thank you, Prerna. Now I will call upon Anushka. You have to strictly adhere to the time limit. Next participant, please be ready. Anjali Sinha. Anjali Sinha, are you here? Anjali Sinha.